This is a young lady, and she's going to tell us what exactly she thinks about this, whatever happened to our doctor. Go ahead. Your name first. I'm Mannat. Okay. I study in World School. Uh-huh. I'm a part of an organization, Animal Protection Foundation. Yes, I know. So I think it's such a shame that we celebrate 78th Independence Day and something like this happens right few days before. I just heard a news that doing a candle march, a girl was going home at night and she got raped. Is that a true fact, or you just heard it? No, Was it on newspapers, or? I don't know about Don't that. believe everything you read, but you might be right. Yeah. Okay, go ahead. Still, you see so much happening in this country, Yes. and still people celebrate Independence Day like there is independence. I don't think Okay. right now there is independence for women, especially women. It's such a shame. What grade are you in? I'm in 11th. Okay. So very soon you're going to be graduating high school. You're going to be going into college, maybe away from here, maybe Delhi, probably. maybe Canada. Maybe Who I was knows? thinking Yeah. to stay here, Yeah. do JE and Yeah. stay here, become an engineer. But after looking at the situation, I don't think it's a safe place. Okay. So what would you suggest the society as a whole, or the government, or entire society, what should they do to make you feel safe in your own country? We can do right now is marching and protesting. We are doing that. Exactly. That's all we can do right now because. If But we what have else can the government do? Your entire administration, your city administration, your state administration, your national administration, what they should do to Punish- make you feel punish- safe in our country? punish the. Okay. Besides the culprits. punishment, what else? I think that's the most they can do. Okay. You know, put down a strict punishment so that others also feel frightened to not do so. Okay. in the future. Great. Thank you so much for Thank sharing you. your thoughts, and I appreciate it. Thank you. Sandman also reporting live from Model Town, Shivani Park. इतने candle march हुनी खत्म हुई है. Sadhana madam just speak there from Animal Protection Foundation, and she is going to share her thoughts with us. Go ahead, ma'am. मेरे को तो यही लगता है और ये कहना है क्यों निर्भया कांड के बाद ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं बनाया गया हाँ जी। कि ऐसी हरकत करने वाले को उसी टाइम सजा दी जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों हमें इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, क्यों हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम उस परिवार की पीड़ा जान सकते हैं, उन पेरेंट्स की जिनकी बच्ची के संग ऐसा हुआ है। उनके संग एक तो बच्ची के संग ऐसा हो गया, उसके बाद उनको इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए उन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, इसके लिए कोई ऐसा लॉ हो जो ऐसी गलत हरकत करे उसको उसी टाइम सजा दी जाए। तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा फास्ट ट्रैक पे इनको कन्विक्ट करके इनको सजा सुनाई जाए एज सुन एज तभी पॉसिबल। इस जो ये जो कांड होते हैं, ऐसी घिनौनी हरकतें होती हैं, हाँ जी। इनको कुछ रोक पाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसे जो इंसिडेंट्स आपने जैसे बोला निर्भया का, आज से 12 साल पहले हुआ था। हाँ जी। सो दिस एवरीबॉडी सेइंग निर्भया 2.0, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक से ये कब तक होता रहेगा? कब तक? जब तक हमारी ये कानून व्यवस्था स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक इनके लिए कोई स्ट्रांग लॉ नहीं बनेंगे, हाँ जी। क्योंकि कातिल ये करते हैं घिनौनी हरकतें, उसके हाँ। बाद वो सालों तक घूमते रहते हैं खुला। हाँ जब जी। तक न्याय आता है तब तक जिनकी संग हुआ था वो भी थक जाते हैं हाँ जी। और आधे से ज्यादा जिंदगी उनकी निकल जाती है। तो एग्जैक्टली। उनको कोई डर नहीं होता। Thank you so much for sharing your thoughts, ma'am. Thank you.